अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन कढ़ाई, बिहारी कबाब मसाला और क्रीमी फ्रूट सैलेड। चिकन को मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा रखेंगे। यहाँ कुछ मसाले हम दही में मिक्स करेंगे। चिकन का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। कढ़ाई कवर करके नान के लिए आटा गूंदेंगे। गूंद के आधे घंटे के लिए रखेंगे। यहाँ हम क्रीमी फ्रूट सैलेड बना रहे हैं।
बिहारी मसाला लगाने के लिए बीफ के पसंदे लिए हैं। मैरिनेट करने के लिए 4 घंटे रखेंगे। मैरिनेट किए हुए पसंदों को हम सीखों में परोएंगे।
कढ़ाई कवर करके हल्की आंच पे पकाएंगे। यहाँ हमारी दोनों डिशेस तैयार हैं। नान के जिस साइड पे पानी लगाया था वो साइड तवे पे डालेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें।